You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. कहाँ थे भाई दिन में तुम आज? What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. अच्छा वो notification आया था कि नहीं आया था ये बताओ? Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile उसमें on जाऊँगा her मैं face. YouTube स्टूडियो में जाके हैंग पेन सपोर्ट में जाके चेक करूँगा मैं. Please come true. 3-4 घंटे बाद यार यही तो समझ नहीं आया ये क्या दिक्कत आ गई. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Foggy? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as वो she's तो happy. मैं चैनल चेक करे तब आया. अरे यार यही समझ आया क्या दिक्कत आ रहा है. Should've इस टाइम expected मुझे it करना wouldn't be पड़ेगा. this easy. करना पड़ेगा मुझे सेटअप करना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है भाई. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. यही करना पड़ेगा भाई क्योंकि अब शैडो है तो क्या कर सकते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Huh? But Dia can handle them. Hey, traveler! अच्छा टैब ना ट्राई करेगा कि वो ना दिया का जो चैन है हर बार दिया बीट करती है इस बार वो बीट कर देगा ताकि दिया वो जो चैन है वो उससे तोड़ना चाहेगा. कहाँ जाना है अबे वो बिंदु बिंदु से नहीं आ गए. आ गया मैं भाई. मैंने कुकीज़ मैंने यहाँ पे बार बार चूज़ किया था ये कुकी कहाँ से आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा है. इस बार हम बीट गए इसको. Oh, it's you. Great timing. Please take...
Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. You... fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's Oh, not like I don't trust your fighting मैं skills. पहले भी मैं मार चुका हूँ भाई Anyway, इन watch पर्सन्स yourself. को. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. That's close enough. Feeling lucky today? Booba, get them! Dissipate! Into the wind. Our bond is strong! One with nature. You can't run! Shiver! Yeah! Into the wind. ओ निंगेश एक बात बता. ओ बड़ी तुझे नोटिफिकेशन आई थी गायब की या तू ऐसे ही आ गया घूमते घूमते? क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत आ गई यूट्यूब पे. ये कुक्कर की एचपी बहुत कम हो जाती है. वो खुद ही अपने मूव्स के चक्कर में डैमेज खा जाती है इतनी ज़्यादा. Into the wind. I'll settle this! और भी कोई है क्या? कौन है? अच्छा ये बच गया अभी. You can't run! नोटिफिकेशन Were you just नोटिफिकेशन आई थी. taking your anger out on those guys? You and Nikita both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, I just remembered something. Remember how during the पता है मैं first इस Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. पता है मैं आया भी इस जब से इस क्वेस्ट को स्टार्ट किया. मैं आज पूरे दिन जेंशिन इम्पैक्ट स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये क्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकता. Okay, so Paimon's लीव कर memory दूंगा is तो working so रीसेट हो far. जाएगा. ऐसा Anyway, वो ऐसा Paimon सजेस्ट also करे remembers तो. that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. बीजीएमआई में शाम को आऊँगा मैं रात के टाइम. माइक कर दो भाई. माइक को पाँचों बंदे माइक को. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on 10 the बजे आ table. जाना भाई. ओके 10 बजे आएंगे. 10 से 11. क्या है इसके अंदर? After almost 16 days, I was finally able to get these notes written before the Sub-Zero festival. Once the festival ends, you and Paimon will probably continue to your journey immediately. So I was hoping that I would be able to give this to you before that. This is a combination of Mox legends concerning Nesser Mode Kusunagi, created from series of interviews that I conducted in sections and wrote down. भाई बहुत बड़ा है. थोड़ी सी Dunyarzad wrote all of this.
Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. मेरे हिसाब से ना ये जो ड्रीमिंग कर रहा है वो कौन है? वो तो है नहीं, फ्लावर्स जो है वो नहीं है, तो कौन है फिर? भाई नाहिदा, भाई कुकी, इसकी एचपी बढ़ाओ। जाना कहाँ है? अच्छा नीचे जाना है। तू डी में को नहीं कर सकता, यही तो दिक्कत आ गई यार, कुछ भी नहीं कर सकता मैं अपने। मुझे आज वो खरीदना था, रेजिन्स खरीदना था सरीन टी पोर्ट से, उसमें भी नहीं टैंगी पोर्ट हो पाया हूँ मैं, कुछ भी नहीं होगा भाई, बहुत दिक्कत आ रहा है, पता नहीं क्या ही चीज़ होगी, बट हो है कुछ ना कुछ गड़बड़। फर्स्ट कैंसिल कर दे। अरे नहीं, अब नहीं, अब तो हो जाएगा ये, वेट करेंगे। अरे नहीं करेंगे, आज हो जाएगा ये। क्वेश्चन अभी कितना बचा है? 10-20% हुआ है क्या अभी तक सिर्फ? It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. अगर मैं सोचूं ना ऐसा कोई क्वेस्ट, ये क्वेस्ट में कोई ऐसा पार्ट आ जाए जिसको मैं कंप्लीट कर दूं ना, तो फिर मैं अगर ये भी कर दूं तो वहीं से कंटिन्यू हो, शुरू से ना करना पड़े, शुरू से फिर सारा आ जाएगा। आई डिलीटेड। अरे यार तुमने जेंशिन क्यों डिलीट कर दिया भाई? Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Milu's dance of Sub-Zeros. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. अरे मत कहो भाई, क्यों? अरे इन्होंने जेंशिन डिलीट कर दिया भाई। That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? ओ भाई सैड पार्ट तो आ गया भाई। अभी तो एचपी नहीं बड़ी कुकी, मैंने तेरे को करके तो दिया था अभी, क्या मंत्र वंत्र सा जो। पता है मैं ना जब तक यहाँ से बाहर था तब तक मैं बारबरा यूज़ कर रहा था, अंदर आती कुकी में चेंज हो गया ऑटोमेटिक ये। If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? कुकी इज़ अ नो भाई, इतने दिनों की मैसेज करने के बाद, इतने दिनों से प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसा सिचुएशन आएगा उसके लिए।
have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler. मत बताओ भाई, मत बताओ. Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting! Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this! So they're just substitutes! What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisarahs went extinct after her death. Yes, the Greater Lord brought forth new Padisarahs in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. Beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisarahs? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Turnip, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? भाई मज़ा तो आ गया इस क्वेस्ट में. एक ना अजीब सी वाइब आ गया इस क्वेस्ट से. Huh? You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Purple Padisarahs don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assume there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisarahs in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendroarchon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. अरे कर देंगे क्वेस्ट यार, हो जाएगा, धीरे धीरे सही पे And she होगा. finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the भाई first बस एक sage, बार वो हो जाए, as if all the knowledge in the complete world हो was जाए. being painted onto a canvas right before him. He was captivated. इसके बाद एक वो पॉइंट आता है ना जब तुम अंक खाता है क्वेस्ट कंप्लीट, नया क्वेस्ट After who स्टार्ट knows हो how गया, long, तब he मैं करना mastered स्टार्ट all the करूँगा. knowledge अभी he तो could मेन comprehend. सैड पार्ट भी नहीं आया है. अरे सैड Afterward, पार्ट he आया said ना, to the Dendroarchon, आ जाएगा यार, I नहीं आया miss ना my अभी आ जाएगा. parents, my wife, and my children. नाइको I've been away from home for far too long.
They must be worried. The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story! I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Thumbs up. James bhai. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zeros. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. गॉडेस ऑफ नावा की जगह दिखाऊंगा। गॉडेस ऑफ नावा वो डेंडो से है क्या? वो भी वैसे एनिमेशन अच्छी की इन्होंने इसकी। Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Time to go.
Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, a Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just हाँ had a वो dream, सही है, मैंने देखा था. and I saw Nilu performing the dance उसे of हिंदी करना पड़ेगा Sub-Zeros. थोड़ा. हो गया भाई, यही तो मैं चाहता था कि जल्दी से ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाए, अब मैं आ जा सकूँ बाकी जगहों पे. अब अभी कहेंगे तो इस क्वेस्ट को ना अभी छोड़ दो, बाद में कहेंगे ये. हो गया बस. ओ मैं 47 हो गया ना. हाँ भाई 47 हो गया. एवं भी अप हुआ है, 47 हो गया 46 से. अब मैं एक बात बताऊं प्रभव भाई, मैंने ना अपना वो होंकाई इम्पैक्ट की ना न्यू आईडी बनानी पड़ी है मुझे, क्योंकि वो उसमें थी, यूरोप में थी वो आईडी. पुरानी आईडी यूरोप में थी. ओह भाई सही है. नाव में अपने हिसाब से मूव हो पाऊँ, अदरवाइज तो मैं मूव नहीं कर पाया था. अरे पर उसमें एक फ़ायदा है, मैंने ना वो 20 पुंग्स नहीं किए स्टार्टिंग में. उसमें मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें ये दिखाया है कि तुम ना 50 पुंग पे गारंटेड 5 स्टार है. तो मेरे पास 30 हो चुके हैं, 10 हो जाएगा तो मैं 40 पुंग पे मैं 50 कर दूंगा. थ्योरी संडे को बनाऊंगा. इस संडे को मैं उसकी पूरी प्रिपरेशन करके बनाऊंगा और मंडे को अपलोड. उसकी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी ना पूरी हिंदी में. पूरी इसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा भाई. अब करना पड़ेगा. मैं देखता हूँ भाई, बस सही टी बोर्ड से घूम गया तो भाई 2 दिन से नहीं गया हूँ मैं इसमें. Would you care to sit? अब भाई ये कैसे करूँ मैं, ये चीज़ बता दो तुम कैसे कर सकते हैं. ये चीज़ है जो थोड़ा ना मुश्किल है, बाकी सारी चीज़ तो कर सकता हूँ मैं. 840 कॉइन्स है अपने पास. मैं ये कितना हो गया, 1200 हो चुका है ना. एक काम करता हूँ मैं ना, रेजेंस बाद में खरीदूंगा. मैं इसको ना 7 करके ना अपना एक और रैंक अनलॉक करता हूँ. रेजेंस मेरा 1200 पे है. ओके तो कैसे बात करेंगे यार, शिट ये मेरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कैसे बात करेंगे हम. ओके ये ऑड है यार, ये अजीब है थोड़ा. बेस्ट ट्राई होगा अपनी साइड से, देखते हैं हो जाएगी. कुछ ना कुछ तो होगा ही. $240 $480 90 90 90 180 आएगा हमारे पास अगर हम करेंगे तो इससे. और हमें चाहिए कितना, 180 400 हो गई. तो 400 होगा ये. हमें 500 करना है इसे टोटल. हमारे पास कोई और वो नहीं है क्या मिशन. If you ever have any questions about the realm देखता हूँ, within, ट्राई करते हैं. कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही है. हो जाएगा कुछ ना कुछ तो. कहाँ है ये वाला.
परचेज एन आइटम फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स टीपोर्ट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओ भाई मेरे पास रेजिन्स भी पूरे पड़े हैं मेरे पास, मैं यूज़ नहीं कर पाया रेजिन्स भी अपने, उसके चक्कर में। भाई मनी मनी मनी। नहीं भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना भाई। अगर तुम्हारे डार्कनेस है तुम्हारे उस पर भेजा है मैंने, मेन आईडी पे भेजा, देखो एक बार चेक करो, चेक करके देखो एक बार। भाई पेटीएम का गिंच क्या हो गया? पेटीएम में कोई गिंच उंगिच हो गया क्या भाई? मैंने तो भेज दिया, ये क्या दिक्कत आ गई है? पेटीएम हेंगो पेटीएम पेटीएम का दिक्कत ही नहीं खत्म होगा भाई ये। माइक को ओ यहाँ पे क्वेस्ट है कोई, यहाँ पे गया कोई क्वेस्ट, क्या है क्या है? डॉक्टर कौन पेटीएम की सीओ को? अरे मैं उसका फ़ोन किया हूँ भाई, उसका फ़ोन उसने बेचारा कहेगा भाई, मैं वो में से ये कहेगा भाई कि मैं ना करना तो चाहता हूँ बट दिक्कत उसको भी यही आ गई ना। और ये देना है कहीं पे, ये शायद यहाँ पे वो ये कह रहा है भाई मैंने अपने जो उसके वहाँ पे स्टाफ है उनसे बात किया उसने, पर स्टाफ उसकी थोड़ी सी वो है, काम चोर है, तो इस वजह से कुछ दिक्कत आ गई है। कह रहा कोई नया स्टाफ सजेस्ट करो, तो मैंने सजेस्ट कर दिया कुछ लोगों को, जैसे मंजूब भाई, 2-3 पर्सन मैंने सजेस्ट किए, हो जाएंगे वो। क्या था 2027 तक हो जाएगा वो। उसकी ना डिस्कशन चल रही है टेस्ला, उसके बीच में ना कुछ डिस्कशन हो गए, तो क्योंकि पेपाल और पेटीएम दोनों में सेम ही हुआ है ना, मोस्टली सेम है, इस वजह से दोनों में कुछ बहस हो रखी है, तो उस चक्कर में
ज़्यादा वो चेंजेस नहीं कर सकता, नहीं तो प्रूफ्स को वो हाइड करने में, तो कोर्ट ने उसे भी मना किया हुआ है। तो जैसे वो कोर्ट उसको एक्सप्लेन कर देगा कि क्या करना है अब, तो उसके हिसाब से वो करेंगे जो भी है। मैंने उससे कहा था यार 28 तक ट्राई कर, बट वो मान ही नहीं रहा भाई। क्या करे भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। डोंट वरी, होता है भाई ये सब। भाई लाइक करो यार, लाइक करो। ओके, यहाँ से हम कुछ बाय नहीं कर सकते ना, इससे बाय कर सकते। कहाँ है ये? आज तो वेडनेसडे, आज तो बाय कर पाएंगे। अरे यार तुम अपनी स्पीच खत्म करो, मुझे बाय करना सामान। ओए ये तो भाई वही में क्या ऑप्शन नहीं आया बाय करने का। हैं वेडनेसडे तो है भाई आज। अरे वीडियो स्ट्रीम को लाइक करो यार, क्या लाइक करो इस टाइम। अरे यार यहाँ नहीं कर सकता मैं बाय, मुझे मॉन्स्टैश है, मुझे हार्बर जाना पड़ेगा। चलो बाद में जाना आगे। समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों शेडो बैन हो गई क्या हूँ, वॉचिंग कम हो गई दिन पे दिन। Time to go. I see how it is. Nice and spicy. One with nature. वेट है सेकंड। ओके मैं वेट करूँ भाई। क्या तो मंजूब का डायलॉग यूज़ करो, पता है मंजूब बेचारा खुद यहाँ नहीं है, मंजूब की खुद की यादें बची हैं बस यहाँ पे, तुम उसका डायलॉग यूज़ करो। Well met. Into the wind. Time to go. Shouldn't get hit. The wind knows me. Can't run. Fine. Well. Punishment. Killjoy. Miscalculated. Hurry up. This was well done. One with wind and cloud. Wind straggles. It's time for a flash freeze. Into the wind. That seemed to work. Nice and spicy. One with nature. First. Lightning terrified. This is trouble. The wind knows me.
Fallen leaves, adorn my night! Out of the frying pan. Time to go. डार्कनेस भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा तुम सोचे हो। वो बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? Follow the wind. ये ngawin lagi भाई। अच्छा एक बात बताओ भाई, सब के सब मुझे ये सब बात छोड़ो। डार्कनेस भाई तुमको स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आया था क्या? मुझे यहाँ पे करना क्या, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा पर्पल वाला वो ठक्कर करने क्या? यार ये बड़ी गंदी आदत है, मैं नीचे कूदा भी नहीं हूँ, ये पूरा कूदा दिया मुझे इसे। शुरू से पूरा क्वेस्ट करना पड़ेगा अब। इट जस्ट कम टू माई होम स्क्रीन। अच्छा यार कुछ दिक्कत आ गई पता है, नोटिफिकेशन नहीं जा रही 2-3 दिन से। अब मैं कैसे समझाऊं क्या हुआ है। कुछ बेवकूफ़ लोग भी हैं ना इस दुनिया में जो हर चीज़ को इतना सीरियस नहीं होते हैं। भाई हो जा भाई, तो क्यों ना इसमें आ रही मेरी। एम ही नहीं होगा भाई, क्या करना है। तो यहाँ पे 3 हुआ है, एक सीनियर मार्क कर दूँगा।
यहाँ पे 3 स्टार्स हैं। वापस से चाहिए। हेलो गोपू भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो? Time to go. Yeah. गोकू भाई तुम जेंशिन इम्पैक्ट कितने साल से खेले? गोकू भाई मेरा आज 35वां दिन है इस गेम का। 35 डेज़ हो गए मुझे टोटल, आज स्टार्टिंग से लेकर 35 डेज़ हो गए मुझे जेंशिन इम्पैक्ट में। साल की बात करूँ मैं, 35 डे हो गए भाई, जस्ट 35 डेज़। तुम मेरी फर्स्ट स्ट्रीम देख सकते हो जेंशिन इम्पैक्ट की, वो 1 मंथ पुरानी है बस, और उसी दिन मैंने स्टार्ट किया है। Thank you for completing today's Add Astro. ओ ये क्या है? एंगमेंट मास्टर, ये सही है, ये भी जो भी उस पर यूज़ होगा जीन पे। मुझे तो उनका 2 साल खेलते हो गए। नहीं यार 35 डेज में है। तुम मेरा अभी देखोगे ना जेंशिन इम्पैक्ट में, उसकी फर्स्ट स्ट्रीम देखोगे, वो भी अभी 1 महीने पुरानी है बस। वो बीच में दूसरी गेम स्टार्ट कर देते ना हम बीच में, वरना ये 30 डेज हुए होते फिर। अब तुम पता है भाई, गेम खेलने की आदत है भाई, क्या कर सकते हैं। ओके ये अच्छा वो नहीं है, कौन सा नहीं वो अभी देखो होना चाहिए यार। इस पे लिखा तो है इस गेम में इस गेम से पहले कौन सा गेम खेल रहे थे। फिर मैं इस गेम से पहले मैं खेलता था माइनक्राफ्ट, जो अभी भी खेलता हूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, BGMI, पोकेमॉन यूनाइट, पोकेमॉन गो, एंड बहुत सारी गेम्स है भाई ऐसे, है तो बहुत सारी गेम्स। बताओगे सर एक सेकेंड में। पोकेमॉन गो, पोकेमॉन यूनाइट, बहुत सारी गेम्स खेले मैंने। मतलब गाचा गेम्स, ये मेरी फर्स्ट गाचा गेम है जिसमें मैंने ट्राई किया है अपना आपको कि कैसा मैं कर सकता हूँ, कि मैं सर्वाइव कर भी सकता हूँ गाचा गेम की इसमें कि नहीं। तो ये फर्स्ट गेम थी जिसे मैंने ट्राई किया था, तो या यही है। और लाइक करो भाई, जो भी अभी आए लाइक करो। देखो यूट्यूब ने मेरी वीडियो को आगे स्ट्रीम को आगे सजेस्ट नहीं करा भाई, वॉचिंग कमा रही है 2-3 दिन से। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत कमाई है भाई, 100 से डायरेक्ट 67 68 हो, ये क्या सिस्टम है। क्या चीज़ मैं समझा नहीं, टाइटन वगैरह, मतलब टाइटन चेंज हो गया नाम इसका। ये नहीं
अभी तो काफ़ी बाकी सारी चीज़ें कुक नहीं करना। मुझे भी अगर टाइटन चेंज करना पड़ेगा आई गेस। रेजेंस बनाऊँ क्या मैं? 120 4 बन जाएंगे पूरे पूरे। ये मुझे कोई और बॉस तो नहीं करना ना, मुझे काजुआ मैक्स हो चुका है मेरा अभी। इसको वो जाविया के लिए मुझे ये चाहिए, ये बॉस। ये कौन सा बॉस है? ये तो अपना पड़ोस में जो है ना वही बॉस है, इसको मारना है। और कौन सा है? ये रोजारिया और ये 2 चाहिए मुझे, इन दोनों को मारना है। तो अभी कंडक्ट नहीं बनाते फिर तो फ्रेंड ही नहीं यार, कहेंगे फाइट करने में ना मज़ा नहीं आएगा। उसको बहुत तगड़ा है वो, मार दिया बहुत बनाएगा वो। टाइटन गेम मतलब साइबर पंक RDR2 रेड डेड रिडेम्पशन 2 COD GTA वगैरह। आज मी गेमिंग भाई, हाउ आर यू? अरे मेरे पास PC नहीं है ब्रो। एक मेरा लैपटॉप था, वो भी गेमिंग नहीं था, नॉर्मल लैपटॉप था, बट वो भी ख़राब हो चुका है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया उसको, बट हो गया कुछ तो हुआ उसे। करेंगे इन फ्यूचर में बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी हमें। तो जाविया की जगह हम यूज़ करेंगे ट्रैवलर। This world is full of unsolved mystery. ओके, ये लैपटॉप से स्ट्रीम कर रहे हो? नहीं, ये नॉर्मल मैं फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये कि मैं जो लैपटॉप था वो खराब हो गया, अदरवाइज़ हर चीज़ इम्प्रूव हो जाती है उसके अंदर में। उसके ना डिस्प्ले पे मैंने कुछ रख दिया है, जिस वजह से उसकी डिस्प्ले वैसे हो गई है, क्लिच टाइप का जो इफेक्ट होता है वैसे ही। और यही दिक्कत आ गई है। One with nature. Stand with me. Booba, get them. Into the wind. कौन सा फ़ोन है मेरे भाई? निक हो जाता है जेंशिन इम्पैक्ट खेलते हुए। अरे मेरा फ़ोन है, मैं भूल गया यार, 1 मिनट को मैं भूल गया क्या मेरा फ़ोन है वो 1.8। अच्छी बात है कि ये मेरा फ़ोन जो है फटने को नहीं होता, बट ये है कि हीट हो जाता है ये। वो भाई मैं कहूँगा क्या, रुक जा भाई। क्या बॉस ना तगड़ा है भाई, मुझे ना मैं 83 का बॉस है, मैं 17 के वो क्या हूँ। ओप्स, यही होगा। Clouds high, the birds call. अबे फायर यूज कर भाई। ठीक है भैया, कहाँ थे वो, कहाँ आए, कहाँ Into the wind. Wind blade. Fallen leaves, adorn my night!
The wind knows me. Time to go. With the wind! अगर मैं फायर ओके Into the wind. मर जा भाई हो गया मर गया तुम 3 दिया है 3 3 6 3 9 3 बार इसको मारूंगा तो 9 हो जाएंगे तो हमें चाहिए कितना इसको अपग्रेड करने के लिए अपने कहाँ गया हमारा कैरेक्टर वो रोज आ गई कहाँ गई ये गई 8 है अब 9 10 11 अच्छा 8 हो गए अब ना 9 10 11 12 4 चाहिए मतलब 2 बार इसको मारना पड़ेगा कुछ नया मिला है हमको 5 स्टार क्या है एक मिनट चेक करना पड़ेगा कैन यू रिव्यू माई अकाउंट सम सजेशन ऑन माई गार्डन एंड आएगा भाई मेरे को 25 दिन हुए भाई गेम में तो मुझसे शिट भाई एक सेकेंड तुम मुझसे सजेशन मांग रहे हो भाई मेरे को 25 डेज हुआ है अब मेरे को अभी कुछ 5 स्टार मिला था मैं भूल गया कौन सा था वो अच्छा इसमें ये एंगमेंट मास्टरी अटैक डिफेंस किसकी है ये भाई फिर भी सजेस्ट कर दो भाई 25 दिन में मुझे कुछ नहीं पता भाई मैं रैंडम यूज़ करता तुमने मुझे तुम मैं काजुआ का देखोगे ना अभी तुम्हें मैं काजुआ का दिखाता हूँ अपने ये देखो मैंने ये यूज़ किया हुआ काजुआ में ये वो नहीं यूज़ करते काजुआ में जबकि ये यूज़ करना है बट ये कि मेरे पास एंगमेंट मास्टरी हो वो बेकार सामान और ये दोनों कंबाइन कर सकते हो क्रिट और ये हम दोनों कंबाइन कर सकते क्या ये शिट भाई ये करना है ये दोनों ये यूज़ करना है इसमें एविडिशन और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो नहीं है मैंने रैंडम यूज़ किया हुआ है मुझे इतना गेम के बारे में पता नहीं है इसको कैसे एग्जीक्यूट करते सारी चीज़ें देखने तो फिर भी मैं नहीं 4 पीस वी चाहिए वी क्या होता है चलो कोई बात नहीं आईडी भेजो चेक करते हैं मैं नहीं बट हो सकता है मेरे तो 12 से 25 FPS आते हैं जेंशिन इम्पैक्ट में मेरे कितना FPS आ रहा है देखो 27 FPS 29 FPS 32 FPS वाह ओके वेट भेजो आईडी भेजो भाई मैं चेक करता हूँ 1000 एंगमेंट मास्टरी भाई मुझे नहीं पता भाई मुझे सजेस्ट कर दो एंगमेंट मास्टरी कैसे बढ़ाते हैं डिटेल्स मेरा 524 एंगमेंट मास्टरी है इसको मेरे को 1000 करना है भाई शिट भाई मुझे भी करना है हो जाएगा मेरे भी एंगमेंट मास्टरी वेट हो जाएगा मेरे पास आर्टिफैक्ट्स में ना इसकी जगह पे कहाँ है इसमें एंगमेंट मास्टरी नहीं है मेरे पास शिट भाई ये इसमें है एंगमेंट मास्टरी इसमें भी है अटैक डिफेंस ये तो बेकार 17 क्रिट रेट है भाई ये 4 का है पर मुझे 5 का चाहिए ये कौन सा था एंगमेंट मास्टरी एंगमेंट ये एक एंगमेंट मास्टरी का है इनहेंस इसमें हम 2 एंगमेंट वो नहीं कर सकते क्या 2 को एक साथ कंबाइन अच्छा ऐसा कोई है कि हम 2 आर्टिफैक्ट्स को कंबाइन कर सके भाई COC अभी भी खेलते हो क्या हाँ COC में खेलता हूँ भाई अभी भी बट ये कि मेरे को स्ट्रेटेजीज याद नहीं है क्योंकि मैंने बीच में क्विट कर दिया था तो मेरे को स्ट्रेटेजीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है मैं स्पैम अटैक करता हूँ जो आईडी भेज दी भाई ठीक से इधर देखना पड़ेगा मुझे कहाँ भेजा भाई तुमने नहीं भेजा भाई अच्छा ये भाई मुझे नहीं पता है गाइडन का मैं भाई मुझे गाइडन का क्या पता भाई 80792031 एक मिनट में याद नहीं 80792031 80792031 5 जेनोवा
आरडी शोगन भाई मेरे को ये, ओ भाई इसका वेपन भी है तुम्हारे पास शी भाई। महंगी बातचीत भाई, देखो कितना वेस्ट किया इन्होंने। ओ कैवगाई का भी वेपन है भाई, वाओ नाइस है। मुझे आर्टिफैक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है भाई। वैसे आर्टिफैक्ट्स आई गेस यही बेस्ट होते होंगे इस पर। क्रिएट सही है भाई। मुझे कुछ इसके बारे में ना ज़्यादा इन्फो नहीं है भाई, क्यों गेम के बारे में बताया मेरे को 35 डेज हुए हैं। कॉन्स्टिनेशन क्या होता है? एक मिनट में अपने आईडी में चेक करता हूँ कॉन्स्टिनेशन क्या होता है। अच्छा ये तो जब डिफरेंट टाइप के काजो मिलते हैं ना तुम्हें, तब मिलता है कॉन्स्टिनेशन। अच्छा ये जो है, नहीं भाई मेरे से ही भाई घड़ी भैया, बनाया घड़ी भैया, क्या हो गया तुम्हें? बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं भैया। एक सेकंड यार, मुझे ना एक कुकी शनोबू रखोगी ना, उसके लिए कोई और चीज़ यूज़ करना चाहिए था मुझे। पूरा रहने देते कुकी शनोबू को। कैसे हो भाई? वॉच आई एम फाइन ब्रो, आप बताओ कैसे हो? नीचे गिर। Our bond is strong. Clouds high, the birds call. भाई नहीं भाई, बच गया। कहाँ इसके? अच्छा इस पे मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है किसी में भी। बच गया। Booba, get them. One with nature. I'll settle this. The wind knows me. Nice and spicy. Disappear. इसकी आइस अभी नीचे नहीं आई क्या? ऊपर ही है। शिट, मैं सोचा नीचे है, तभी मैंने वो यूज़ किया था, टोर्नेडो जैसा जो भी है। Booba, get them. One with nature. At the frying pan, it's The wind knows me. Time to go. your toast. Dissipate. Fallen leaves, adorn my night. एक सेकेंड, 12 बजे पड़े हैं। 12 बजे पड़े हैं भाई, सही है भाई। Time to go. One with nature. Windblade. With the wind. Into the wind. भाई समर टाइम सागा खेल, भाई समर टाइम सागा में खेल चुका हूँ ऑफ स्ट्रीम। मजाक करो, सीरियस मत हो जाना, मजाक करो भाई।
तुमने खेला है क्या? मे बी। बेकार है गेम भाई। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। जब मैंने सर्च किया ना उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स में, तो मेरे को समझ आया भाई नहीं, हमें ये गेम खेलना ही नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था भाई, इतना झूठ मत गो भाई। लग तो नहीं है भाई, तुम ऐसे ही पूछ रहे थे। काजुआ को मेन डीपीएस की तरह यूज़ करो कि काजुआ को वैसे यूज़ करना है? हो गया, मेरे को ये चाहिए था बस, हो गया काम मेरा। अभी डोरेमोन का भी आया है ऐसा कुछ। डोरेमोन का भी आया ऐसा कुछ भाई, सच में यार भाई? डोरेमोन का कौन भाई, किसने बनाया ये? मॉन्स्टर स्पॉन नहीं हो भाई अभी तक। थोड़ी और दूर जाना पड़ेगा। डोरेमोन का ये कुछ भी बनाएगा ये भाई, क्या है ये डोरेमोन का क्या? ओह याद आया भाई, मैं चेक कर रहा हूँ तुम नहीं। अच्छा, डोरेमोन का भी कुछ हंसाया है क्या भाई? देखो, इससे किसी की ना नहीं चेक कर सकते तुम। शराफत चेक करना और इसमें चेक करने में कुछ डिफरेंस होता है भाई। देखो, ऐसे चेक करना इज़ नॉट वर्थ इट। जो ऑनेस्ट होगा, जैसे कि मैं, तो मुझे पता है, अगर मुझे पता है भाई तुम टेस्ट ही करो, तुम स्टार्टिंग में ही झूठ गया तो क्या हो रहा है। ट्रैवलर मैक्स करो भाई। समर टाइम सागा की बात हो गई है, कैसा चंगा गेम है। मुझे वैसे सजेस्ट प्रभव भाई समर टाइम सागा के ना, वो हर बार लिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अगर तुम में से किसी को लिंक चाहिए समर टाइम सागा का, तो प्रभव भाई तुम्हें दे सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो। अरे मैं अभी वो मॉन्स्टर्स हंट कर रहा हूँ थोड़ी से, मुझे ना वो चाहिए, अपने वो जारिया को मैक्स करना है, वो जारिया अपग्रेड करनी है। ओए मुझे बदनाम मत। अरे भाई, मुझे किसी ने पूछा है कि भाई समर टाइम सागा खेलेंगे तुमने? मैंने कहा नहीं। इट्स ओम भाई, हाय ओम भाई, कैसे हो तुम? अब भाई आ गया मॉन्स्टर, अभी पिछली बार तो आया था तब नहीं था यहाँ पे भाई। तुम ही तो बता रहे थे वो, पता नहीं कोई कार्टून जैसा कुछ गेम है, तुम बता नहीं थे उस दिन। आप प्रभव भाई जो तुम बता रहे थे। अरे यार कहाँ है? एक सेकेंड भाई, मेरे को चैट देखने दो। भाई मुझे एक भी लिंक दे देना, मुझे भी एक लिंक दे देना। ओ डार्क स्टार बाजी कैसे हो? वेलकम। हैंगो भाई, ओम भाई। भाई लाइक करो यार, जो भी आए हैं लाइक कर दो स्ट्रीम को तुरंत। बताओ भाई को बदनाम कर रहा है। अरे भाई मुझसे पूछे भाई कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा होशियार है, तो भाई मुझे तुम्हारा नाम याद आया, क्योंकि भाई मेरी नज़रों में तो तुम ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो भाई इन सब चीज़ों में। आजा नीचे आजा। One with wind and cloud. Wind strider. तो वो दिन बता नहीं रहे थे कोई एक टेडी एनिमे टाइप की गेम है। मैंने जब जेंशिन के बारे में तुमने मुझे सजेस्ट किया कि जेंशिन अच्छी गेम है, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा और भी कोई गेम है, तो तुमने कहा था वो संडे मंडे कुछ ऐसा बता रहे थे। ओह सॉरी, समर टाइम सागा कुछ ऐसा बता रहे थे। तो वही भाई भी पूछे थे अभी।
यहाँ पे आइस है। Nice and spicy. The wind knows me. All settled in. Boba, get them. Clouds high. The birds call. With the wind. Wind blade. Nice and spicy. Into the wind. क्या को क्यों बंदे? को में बंदे? Stand with me. मैं को बंदे ऐसे कैसे हो सकते? मैं को बंदे 1 मिनट चेक करना पड़ेगा मुझे। हो गया मेरा। जीन को अपग्रेड करने जितना तो हो ही गया होगा। जीन का है, जीन के हो रोजारिया को ये चाहिए मुझे। ये और ये भी होगा अपने पास, ये तो बन जाएगा। ये बात चेक करते हैं वहाँ पे जाके। पाजी वो तुम्हारे खबर पर, अरे यार पाजी वो तुम्हारे को अरे यार पाजी मैं पता है पूरा रीड करने वाला था। ये मैं जैसे ही देखा ना रीड कर रहा था मैं। अगर मैं रीड कर देता ना भाई पक्का डीमोनिटाइज होता ही होगा वीडियो तो। पता नहीं क्यों। अरे 1 सेकंड में चेक करता हूँ कहाँ है भाई, बंद कहाँ है? सही तो है, ज्वाइन का ऑप्शन आ तो गया। अरे नहीं करना भाई, रीड नहीं करना मुझे। अरे यार गैजेट्स में जाना है भाई। Time to go. अबे मैं फंस रखा। अरे तुम्हारा क्वेस्ट ऑन है क्या? ओ भाई माइक को यार। अब तुम्हारा वो दिक्कत आ होगा कि कर 5000 क्या अंक हुए? पाजी मैं सुपर चैट ऑन नहीं है यो। तभी तो वो क्या है भाई, उन्हें पता है सुपर चैट ऑन नहीं है। ओके क्या कर रहा था मैं? यहाँ जाता हूँ स्टैश। पेटीएम में ऑन है ना? अरे यार नहीं है तो भाजी। तुम सब उल्टी सीधी चीज़ें करवाओगे भाई, नहीं है, जरूरत नहीं है। 7 मुझे वो भी अपग्रेड करना है, दूसरा कैरेक्टर भी। और क्या करना है मुझे? पट्यूई आ गया, ये चेंज हो भाई। ओह भाई मैं डर गया, मैं क्या बिंगे वहाँ बना के टैक्स के वीडियो कर दूंगा। नीक कर दोगे? कर दो भाई, होना भी चाहिए उसके लिए भाई। इसी बहाने मेरे को मोटिवेट तो होगा ना कि भाई किसी ने गंगा से ही सोचा, पर है किसी ने मजाक में ही सोचा, कम से कम सोचा तो सही। ये चाहिए मुझे, बस ये चाहिए, फिर मेरा ये भी हो जाएगा 80। भाई तुम सीक्रेट क्लास पढ़ी है क्या? अच्छी मांग है सीक्रेट क्लास, अच्छी मांग है सीक्रेट क्लास, अच्छी मांग है। नहीं भाई नहीं पढ़ा मैंने। आगे ऐसे ही रैंडम नेम्स हो, तुम्हें पता है क्या होता है। सीक्रेट क्लास अच्छी मांगा है। थैंक्स फॉर सजेशन भाई। वैसे अभी तक पढ़ी नहीं थी, बट अब है प्लान कि हाँ पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, टेंशन बताओ।
कोजी ये कौन है? मेरे पास कोई मिशन तो है नहीं भी करने के लिए। सीक्रेट क्लास में इससे ये कैसा नाम है भाई? ओह जो तुमने नाम रखा है उसकी बात करो क्या? नहीं भाई ऐसा कोई नाम वाम को मैं नहीं जानता भाई। भाई उसके पे होना चाहिए, जब है ही नहीं तो फिर बाकी बात तो छोड़ ही दो भाई। यार ये बहुत बैगीज रेयर है क्या? पता है तुम्हारे ना गैविंग अप करने पे सब सही चंगा होता है, फिर तुम्हें याद आता है कि कैरेक्टर को भी गैविंग अप करना है, फिर वो तुम्हारी ऐसे तैसे कर देता है उतनी देर। वो ये बात तुम्हारी। ओ भाई ये जो इसे रेड रेड इफेक्ट आया था ना भाई, बड़ा मस्त इफेक्ट था जो भी था। जा भाई उसी बुड्ढे के पास जियो जो तांत्रिक है वहाँ पे। तांत्रिक तो है नहीं उसमें। हाँ मैं इधर जा रहा था, इधर मैंने फंगावा मार किया, वैसा क्यों? ऊपर है क्या इसके? भाई कौन है भाई? अरे ऐसे ही बोलेंगे भाई, तुम्हें पता है यार, तुम तो स्टार्टिंग से जानते हो भाई सब कुछ, उसके बाद भी भाई सैडनेस का अगर कोई फेस होता ना अभी ये बात सुन के, तो किसी ने झूठ में तो कहा भाई कि हमारा भी कुछ ऐसा है, अदरवाइज तो भाई हम तो सोचे थे कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई इसका काजुआ का सही है भाई, एक अटैक में तोड़ता है। यार इसे ये शॉट में काजुआ को दे दूँ तो ज़्यादा बेटर नहीं है? मैं काजुआ को वैसे भी डीपीएस के टाइप में यूज़ करता हूँ। भाई जो सोचना है सोचो भाई। हाँ प्रभव भाई अगर मैं काजुआ को वेपन दे दूँ तो, जो मैंने ट्रैपनर को दिया हुआ है, आयरन स्टिंग की जगह कैसा रहेगा ऑप्शन? यार ये हो गया कब तक? वो जारिया क्लेम और यूज़ कर इससे तोड़ने में। हाँ डैमेज क्यों बढ़ा रहा है उसका? फिजिकल थोड़ी है वो। अरे वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आयरन स्टिंग जो था ना वो तो एंगमेंट मास्टरी में उसकी हेल्प कर देता है, तो वही मैं पूछा था कि फिजिकल उसको मतलब डैमेज में ज़्यादा यूज़ करने के लिए सही है काजुआ या फिर एंगमेंट मास्टरी यूज़ करने के लिए सही है? मेरे हिसाब से तो एंगमेंट मास्टरी सही है। ये मुझे फंगावा ही चाहिए, कहीं और है क्या कोई? ओ सामने भी एक पेड़ है क्या? ये तो ये यार जिगड़वा में बैगी सोए कहाँ मिलते हैं, किसी को पता है क्या? मुझे कितने चाहिए? कम से काम से बाहर जाओ। ठीक है सोई पाजी आपको
मजाक कर रहा था, बुरा तो नहीं। अरे नहीं बाजी, डाक्टर बाजी मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो भाई, सबको पता है मजाक कर रहे हो। अरे ये जो रेडिश वाली बैग नहीं थी अभी, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया ये मॉन्स्टर्स लिखा हुआ है तो, और मुझे चाहिए ये 23 हो गई मेरे पास, 22 और चाहिए मुझे। स्टोन बेरियर माउंटेन उसी पे तो हूँ मैं। Sooner we're done, the better. ये कौन सी जगह पे हूँ मैं? स्टोन बेरियर माउंटेन पे तो था मैं। यहीं पे तो था मैं अभी तक। तो छोड़ो यार, बाद में कर देंगे इसे। मेरे पास 40 वो बचा है अभी, इसको मारना पड़ेगा अब। कहाँ है फायर? अपने उसको भी तो, इसे भी तो अपग्रेड करना है। इसके लिए क्या चाहिए मुझे? 12 ये चाहिए। जो देखते हैं मार पाएंगे। पता है मैं इन सब मॉन्स्टर को ना पहली बार फर्स्ट टाइम मारा हूँ मैं सिंगल। अदरवाइज मैंने आज तक इनको कभी ऐसे नहीं मारा है कि अकेला घुस गया हो मारने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम मारा हूँ ऐसे इनको अपने वंड में। बाकी वंड में तो मारा हुआ बाकी लोगों के, बट अपने वंड में मैं फर्स्ट टाइम अकेला मारा। या फायर इफेक्ट तो मेरे पे भी आएगा, फिर तो मैं भी ठंडर का इफेक्ट मुझ पे भी होगा ना। बारबरा एंड मोना, ओ ये फायर क्यों रखा हुआ है मैंने? वो जारिया हटा दिया क्या मैंने? बारबरा मोना हटा के वो जारिया हटा दिया बाय मिस्टेक मैंने। कहाँ गई वो जारिया? Sooner we're done. ये से है ना इसके लिए। इसकी आँख कहाँ है? Shadows of fate. You can't run. आओ भाई, मैं अकेले आज तक नहीं मारा। मोना पंगस काजुआ वही मैं यूज़ कर रहा था। यार इसको स्टार्ट हो गया यार भाई। आ जाओ यार काजुआ के, आ जाओ। मेरे पास काजुआ हुआ है। अरे यार मोना हट गई मेरी, मेरे पास वो बचा है वो जारिया पंगस काजुआ। मुझे बाहर से आना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वो बाहर जाना पड़ेगा। किधर जा रहा हूँ मैं? रॉन्ग साइड आ गया मैं। इधर जाना है मुझे। मुन्ना मोना भी मेरे को 80 करना है, 70 अभी तो। और तुमने निपटा तो नहीं दिया ना बॉस को? कहीं मैं पहुंचूं तब तक निपट चुका हूँ। Written in the stars. As one with wind and cloud.
ओ सजाऊंगा मुझ कर भी तेरे बदन की डांग को। भाई क्या देगा है? 2 देगा यार, 3 तो दे कम से कम। निपटा दिया भाई, निपट तो गए भाई। और मेरे एजेंट्स भी खत्म हो गया। भाई आज रंग बढ़ा। अरे मेरे को अभी पीछे 3 मिला था भाई। कितना है मैं बंग कितना है मेरा? 6 है। 7 कैसे कहेंगे इसको? बाय 1 एवरी 5 एडवेंचर रैंक, मतलब अभी मेरा 45 पे है 6। 50 पे 50 पे हो जाएगा 7, 55 पे 8। ओके Time to go. सजाऊंगा मुझको भी तेरे बदन की डांग को। ओयो मोना बंग बढ़ाना, वही तो बढ़ाना तो 2 ही मिलते हैं। अबे हो गया भाई, कितना दिखाएगा? हो गया भाई, टेंशन तो नेविगेशन। मेरे पास कंडक्ट है क्या? मैं चेक करूँ कंडक्ट पे। तो क्यों ऐसे मेरे पास 2। ये क्या है? डस्ट ऑफ अजोत, ये की है, ये 2 की है। ओके Into the wind. Clouds high. भाई मार दो तुम तो। The wind knows it. Wind Strider. सो मेरी क्वेस्ट को क्या मैं वापस वही, बट ये दिक्कत है कि यार फिर से वो वही फंसा देगा यार कि मैं तब तक कुछ हो नहीं कर सकता। कोई और प्लान है तुम्हारा? मेरे हिसाब से सुमेरी क्वेस्ट करना सही होगा, क्योंकि अब रेजिन्स है नहीं मल्टीप्लेयर में, क्या करवाऊंगा मैं अभी। एक सेकेंड, प्रभा भाई मेरी बात सुनो, देखो देखो देखो, जो मेरे पास वो है मून रेजिन्स है, उनको मैं यूज़ करूँ कि ना यूज़ करूँ? अब तो 45 हो गया ना, इससे ज़्यादा थोड़ा ना। रेजिन्स जो है मेरे पास मून वांग है, उनको यूज़ करूँ कि ना यूज़ करूँ?
into the wind. मेरी जगह मार्क कर। वोंग बेरी है यहाँ पे। कौन सी जगह पे? कौन सी किस जगह पे हो तुम भाई? किस जगह पे? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. थोड़ा सा मूव हो गया आगे It is the पीछे भाई। last link I have to the land of थोड़ा my सा birth. मूव होना। मैं आ ही जाता हूँ वहाँ पे। रुक जाओ। मोना मोना का स्विमिंग सही है देखने में थोड़ा सा। Certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. Time to go. Time to go. कहाँ था ये बार मार्क कर? कहाँ था? वो नहीं यार, शीट नीचे कहाँ जा रहा है? ये तो है, व्यू तो है। कहाँ है बैगोई? कहाँ है बैगोई ब्रो? यहाँ पे अंडा पड़ा हुआ तो ये मुझे चाहिए वैसे थे उसमें। वो हो गया, मुझे अब चाहिए 22 में से 18। नहीं देहरादून नहीं जाना भाई, देहरादून तो जाना है बट अभी नहीं जाना। पूरा एड्रेस बताओ यार, ऐसा तो नहीं समझेगा। पूरा एड्रेस टाइप को भाई मस्त है व्यू भाई। देहरादून भाई। हाई स्टडी विद मी भाई, कैसे हो? ओ मैं यहाँ चैट दे हो। अच्छा देहरादून से मसूरी के माउंटेन्स तो तुम्हारा सही है, माउंटेन एरिया यार। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Time to go. यार सही है तुम्हारा भाई। देहरादून मसूरी। हाँ भाई दिल्ली में अटके पड़े भाई पोल्यूशन के बीचों बीच। तुम सुबह उठ के पेड़ पौधे देखते हो, हम सुबह उठ के धुआं देखते हैं। ये आज कुछ ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं बढ़ गया है? क्या कर भी सकते हैं भाई। हो भाई भाई आना तो है मुझे। Time to go. How about we explore the area ahead of us later? पाइमन बेवकूफ़ है क्या भाई? नो पानी में गिरा दी मुझे। अच्छा मैंने लोगों को यूज़ करके देखा है कि वो पाइमोन गिनेच ऑफलाइन होने का गिनेच दिखा के वो पाइमोन बेरियर पार कर जाते हैं बिना किसी
इशू गए। तो ये क्या, तो वो जो नए मैप्स हैं जो कि अभी आए भी नहीं, वो नहीं एक्सप्लोर कर सकते ऐसे तो? जो बिंग्ड नहीं हुए अभी तक। भैया कोई आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो ना? बीजीएमआई का नहीं भाई, बीजीएमआई का नहीं कर सकते मैं। बीजीएमआई पे मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं इससे भी, और वैसे भी आजकल व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों, 2-3 दिन से। ओ 1 सेकंड यार, 1 सेकंड में समझ गया। मेरे को एक मे भी यार इस रीज़न से होंगे शायद, व्यूज़ कम होने का रीज़न समझ आ गया मुझे। प्रभव भाई डिस्कॉर्ड में बताऊंगा मैं कि कुछ ऐसा सीन है शायद, उसकी वजह से भी व्यूज़ कम हो सकते हैं। हाँ मैंने आपको बोला था ना बीजीएमआई आई भाई, बीजीएमआई आई। तुमने कहा था कि तुम आओगे, मैंने लाइव स्ट्रीम किया है, तो तुम आए नहीं, इस वजह से मैंने होंकाई इम्पैक्ट की स्ट्रीम किया था। तुम्हारे ना आने की वजह से, ना चाहते हुए भी मुझे होंकाई की स्ट्रीम करनी पड़ी। तुम देख मेरे बार जाके, मैंने आज स्ट्रीम किया है उस टाइम पे जिस टाइम तुमने कहा था, और तुम आए नहीं। तुमने धोखा दे दिया भाई। तुमने धोखा दिया भाई। तुमने कहा था तुम आओगे पर तुम आए नहीं भाई, ये अच्छी बात नहीं है। सब गेम्स, अच्छा सब गेम्स का भाई सब गेम्स खेलेंगे, पर मैं जेंशिन तो एक गेम तो ख़त्म हो जाए यार। मैं तो यार स्टडी विद मी भाई, तुम लाइक करो स्ट्रीम को और मैं बाकी बात करते हैं आपसे। मैंने आपको बोला था ना, अरे करना है भाई, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड में को ना थोड़ा ये देखो अपना सेटअप, मोना हटाऊं। भैया मैं आया तो 4 व्यूज़ हो गए पहले, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले 3 थे भाई, तो तुम्हारे आते ही 4 हो गए। थैंक यू फॉर ताना भैया। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊँ सिर्फ में। और एक सेकंड, अपने काजू के स्टैट्स में काजू के ये है, काजू बादाम भाई दिखाओ। ये
ये है काजू आगे। You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. एनर्जी ठीक है, क्रिट 8 बढ़ा। वही तो मैं मुझे क्रिट 8 वांगा मुझे मिल नहीं है ना अभी आर्टिफैक्ट्स, ये तो दिक्कत है। अच्छा ये क्रिट 8 दो आर्टिफैक्ट्स कंबाइन कर सकते क्या हम किसी तरीके से? Talk about Dunyarzad first. डीपीएस काजू बनाओगे? Such a relief that she's all right. डीपीएस After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. तो 5 स्टार आर्टिफैक्ट्स है ना? हाँ बहुत सारे भाई। Dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once मेरे पास बहुत सारे 5 स्टार हैं। क्राफ्टिंग टेबल पे जाओ, her consciousness began to बताता हूँ। dissipate. एक सेकंड जाता But this also meant it escaped the Akasha's हमें control. काजुआ को डीपीएस ही तो बनाना Such a है, small मेन fragment डीपीएस of की तरह यूज consciousness can't last for very long, though. हाय It will साओ return कैसे to हो? its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. मेरा AR 47 हुआ है आज ही। AR 47 है मेरा। Both are fine. Everyone reacts differently. भाई 5 स्टार वेपन है तभी बनाना, वरना सपोर्ट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। 5 स्टार तो अभी नहीं है भाई, बट सपोर्टर बना दो यार, उसमें क्या है। डीप भाई मुझे ना 35 डेज हुए, ज़्यादा नहीं हुए, मुझे पता ही नहीं है सपोर्टर और सब डीपीएस में कितना फ़र्क होता है। अरे नहीं, डीपीएस बिना वेपन के भी बन जाएगा। डोंट स्कोइंग बेबी भैया यार स्टडी विद मी भाई, तुम क्या बात कर रहे थे? मैं खुद बना रखा है, अकाउंट रिव्यू करोगे भाई? भाई मैं अभी बताऊँ भाई, मेरे को 35 डेज हुए गेम में, मुझे तुम मुझसे अकाउंट रिव्यू करवा रहे हो। मुझे ये नहीं पता डीपीएस और सब डीपीएस में फ़र्क क्या होता है। मैं अकाउंट रिव्यू में क्या करूँगा? माइक को वीडियो माइक को स्ट्रीम माइक को। At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. एग्जायू देखने उसका। ठीक है, मैं अकाउंट रिव्यू कर दूँ। एक सेकंड, हमारे पास प्रभव भाई है ना, वो बताएंगे तुम्हें जो भी डिटेल देखनी है। So you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. मोबाइल नंबर नहीं दिया आपने भाई, मैं मोबाइल नंबर दूंगा भी नहीं। कैसे क्वेश्चन करते हो भाई स्टडी विद मी भाई? मैं कैसे दे सकता हूँ भाई अपना फ़ोन नंबर? कैसे दूंगा मैं तुम्हें? तुम फ़ोन नंबर मांगते हो, कभी तुम कहते हो भाई तुम इस गेम डाउनलोड करो। मैंने वो गेम डाउनलोड, तुम्हारे कहने पर मैंने वो गेम डाउनलोड किया। सबसे वाहियात गेम लगी थी मुझे आज तक वो। एग्जायू ने दिया है कहाँ मोबाइल भाई? वो आईडी का, वो उसका आईडी नंबर है भाई एग्जायू का, सायू का भाई, एग्जायू के मैं सायू, वो सायू का आईडी नंबर है गेम का।
Some present-day desert dwellers still worship him. भैया हम भी बिगनर हैं। अरे सही है, मेरे को तो भाई मेरे से तो बेटर हो गया ना भाई, मेरे तो 35 डेज हुए हैं। मैं एक एक डे काउंट कर रहा हूँ। मैं हर स्ट्रीम के एंड में ना उस डेट को मैं मेंशन करता हूँ कि आज कौन सा दिन था इस गेम में। अब तक 34 डेज 34 स्ट्रीम्स हो चुकी है जेंशिन की, ये 35 स्ट्रीम है मेरी। भाई सायू ने नंबर ही नहीं दिया है भाई स्टडी विद मी, वो उनका आईजी है, आईजी के हो यूआईडी है इन गेम, इन गेम आईडी जो होता है वो। I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, damn, you have a lot of content. ये तो है। Is it because of the contaminated consciousness? मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई की Even if you can't figure out what that फाइनली vision मेरे was को all जेंशिन about, मिला it seems like जिससे our मैं search इंजॉय, for you देखो was मैं all बताता हूँ, in मैं vain. माइनक्राफ्ट और The ऐसे traveler wasn't affected कुछ after गेम्स है जो coming in मैंने contact ट्राई with किया that consciousness. और मुझे I've मज़ा आया। never जैसे seen माइनक्राफ्ट हो anyone गया, like सीओडी that. हो गया, With you here, बीजीएमआई में we मुझे may मज़ा have तो a आया chance है at पर व्यूज़ नहीं deciphering आए, it. तो मैंने बीजीएमआई इस वजह से बंद कर No, दिया। we must decipher its और secrets. I've already जेंशिन इम्पैक्ट ऐसा है eliminated जिसमें all the मज़ा भी आया, factors व्यूज़ that भी आए, might तो इस affect वजह से मैं Irminsul. जेंशिन पे This टिक is जाऊँ the अभी थोड़ा। only one left. ये जायू कोई बिगनर नहीं है, This झूठ puzzle has बोल life and रहा death है। at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tuvak's. Got it. I hope कोई the बात नहीं answers यार, were देखने में क्या satisfactory, जाता है seekers of knowledge. देखने में क्या जाता है, हमें आईडी शो करने बस। Maintaining Dunyar's 7 5 breathing स्टार्स flow हैं took इस a पे, lot of 7 mental 5 energy. स्टार्स है भाई मेरे पास, 3 5 स्टार है, वो भी एक ही दिन निकले तीनों। भाई मैं कर्ज था पता है, मेरे 90 की 90 के हो, 83 की पीटी पे फर्स्ट 5 स्टार निकला है, 85 की पीटी पे, On the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. बाकी हिडन है भाई। शॉफ भाई शॉफ, सायू भाई से शॉफ करना सीखो। Literally. ओ माय गॉड, स्टार्स देख जरा, 1 मिनट में ये खत्म तो। Traveler? Paima? Why am I here? Do Actually, either we are of you know? blackmailing you to Stripe. Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up. सारे डीपीएस sleepwalker. बना रखे। ओ भाई We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. आपने में I ये should visit my break maintenance क्या personnel है? sometime. सब Oh, कुछ। I'm fine. I better go. Thank you. ओके, पहले आईडी चेकआउट करते हैं। कहाँ है आईडी, वो कहाँ है आईडी का है? एक सेकेंड, 86542582, 86542582, 86542582, ये ना। ओ भाई हार्ट अटैक की सिचुएशन आ गई भाई। एक सेकेंड, गाइडन का सीडी क्रिट, अच्छा क्रिट डैमेज कहाँ है गाइडन? सीडी मुझे नहीं पता भाई, मेरे से तो पूछो ही मत, मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे दिखा है कि भाई 5 स्टार कैरेक्टर। ओ भाई वॉन्डर, भाई चुप हो जा भाई। सायू भी अच्छा है भाई, इसमें वो काजो कहाँ है? मुझे काजो का देखना है। 200 जा सकता है। बिजर्ड है वो बिजर्ड है वो। अच्छा बिजर्ड में यूज़ करते होंगे शायद वो। वैसे उसका 200 जा सकता है तो बढ़ाओ भाई, सही है। देखो मेरी साइड से तो भाई 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं है, बट मेरे को ना इतना पता है कि नेवंग 90 है, मेरे नेवंग 80 है भाई। ये मुझे चाहिए, मेरे पास एक भी डेंडो वो नहीं है। और ये तो भाई ये तो ड्रीम है, ये भी चाहिए। 2 हो गया, ये तो है मेरे पास। जीन तो है, जीन तो निकल गई थी, बाकी सारे चाहिए।
बंगाल स्टेप बॉन्ड ओके अच्छी आईडी भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई न्यू क्वेश्चन Time to go. मेरे पे Ad Astra Abyssos. Windy We meet again, Spear you है. two. So I have a better Hi, Sayu Catherine. Do you have any commissions for us today? Spear Commissions, huh? Let me think. भैया मेरा भी है ना How about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon Study with me, and भैया recite a love क्या है poem on तुम्हारा stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. नहीं डट वो Hyman's gotta ask. Just who exactly has been submitting these? Oh, अरे यार मैंने स्किप कर दिया नाइको भाई नाइको well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Hyman just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? भाई नाहिदा She said, Ad Astra Abyssos. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. कैथरीना एक पपिट है कैथरीना एक पपिट है कैथरीना कौन है एक पपिट है भाई गाइडन शोगन भी तो एक पपिट है भाई आरएस भी तो एक पपिट है It was another But who dream cares? about the Sub-Zero's festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City कहाँ was जाओ holding study with me, hands भाई? as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a जिसे gigantic तू वोट flower कमीशन कहता terrace. है वो तो है ही Fairs, the night of flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. तेरे सामने Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, no, we aren't pitying you. मैं That would only make everything जाऊंगा worse. तो We आपकी just don't want you to feel साथी too sad. मेरी By the way, गीना भाई have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. यस Yes, I paid her a visit right after I woke यस up. स्टडी She was विद resting भाई at the यस time. Her condition Definitely. is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering of the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsol's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of मजा the हूँ। Sub-Zero's festival?
So our first priority अभी should कहाँ be जाओगे भाई? investigating and putting मैं a stop to the sage's जाऊंगा आपको activities. भाई मत जाओ भाई As for how स्टडी we should में pull भाई that हमें off, छोड़ के तुम मत let's जाओ discuss भाई. it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Check the quest for more menu. भाई कितना बड़ा क्वेस्ट है ये. वो मुझे एक्सपी मिल है ना, बट ये अच्छी बात है. छोटी छोटी सी चीज़ें को एक्सपी मिल जा रही है भाई. एक्सपी बहुत अच्छी फार्म कर सकते हैं हम यहाँ पे. वो Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. प्राइमो जेम भी. प्राइमो जेम की कौन किया गया था भाई. एक्सपी चाहिए मुझे. 5 स्टार को कौन सा 5 स्टार कौन सा है आपके पास भाई. मेरे पास 5 स्टार सिर्फ 3 ही है, वो भी मेरे को एक ही बार में मिले हैं. मेरे को 5 स्टार कभी मिले ही नहीं भाई. 85 87 की पिट्टी पे मेरा पहला 5 स्टार निकला भी, वो भी मैं हाई गया. 50-50 हाई गया था अपने. और 50-50 हारने के बाद 20 पुंग में मेरा काजू आ गया था. और फिर 1 पुंग के अंदर जिन आ गई थी. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. But this trusting me would make perfect sense if they've ever paid attention That to the means urban मेरा legends about 5 them. स्टार का जो वो है कर्स वो In टूट any गया है. case, मेरे 5 स्टार I मिल सकते. probably can't take over their minds directly. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to कोई terrible तुम में से कोई consequences. तुम में से कोई वो मिलता है होंकाई इम्पैक्ट. Every person in Sumeru City Honkai is one of Star. their hostages. क्या था कुछ इनका कभी सही है ये थोड़े ही किस्मत है. सही है ये होती है किस्मत. अरे नहीं भाई. No way, that's too risky. You mean it'd be 3 too 5 easy स्टार to में get 2 caught? एनिमो है भाई. ये भी तो सोचो. No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. यश अभी तो तुम्हें पता नहीं क्या हाल है फ्री टू प्लेयर्स का. अरे यार कोई बात नहीं. हमें कौन सा कुछ जंग दिया है. हम कौन सा फाइट ऐसा कुछ सिचुएशन में है. Are we really out of ideas? करेंगे कंटिन्यू You're करेंगे. super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us भैया in आपके suspense. सेकंड चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है. भाई मेरे सेकंड चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है. उसका रीज़न ये है कि मैं कहीं घूमने गया. Rejecting impractical motions at the beginning of a planning session मैं will उस पे give more मेरे weight सेकंड to चैनल the पे ना पता actual कैसे वीडियोस आते proposal. हैं. उसमें ये वीडियोस आते हैं कि जो मैं डेली लाइफ में करता हूँ. You don't have to use that kind of gimmick to make us मैं take your ideas जब मैं गार्डनिंग करता seriously. हूँ कोई फ्लावर का ऐसे फ्लावर जो कि देखने में ब्यूटीफुल लगे तो मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा. And if I जब can't get मैं बाइक से ordinary फर्स्ट टाइम people बाइक की पूजा involved, करवाई थी तब बाइक की then पूजा I में should शॉर्ट find बनाया, someone who's अपलोड कर दिया. already involved, और but ऐसे ही hasn't सारी decided to चीज़ें. side with the sages. You're मतलब saying we should मॉर्निंग वॉक पे recruit गया a था, spy? वो भी सही था. That does sound like मतलब it ऐसी could रैंडम work. चीज़ें जो कि मैं एंजॉय करूँ. मैं चाहता हूँ कि तुम भी एंजॉय करो. ज़बरदस्ती we करो तो now करो. hate them. ये आपके He seems सेकंड like he चैनल acts एक तो alone, ये ना मेरे and he चैट likes रिपीट हो doing जाती है. stuff behind the academia's यहाँ पे back. मुझे पैंगा दिख जाता है और Probably aren't फिर in नीचे बाद में दिखते हैं. Actually, I already have someone in mind. भाई लाइक कर दो यार जिसने भी You still लिखी है. remember that female scholar named Sataria? Sataria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu.
I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Setaria, अरे सितारे Later on, भाई. she was chosen by the sun. The Setaria stars नहीं वो given a सितारे place होते in भाई. the क्या daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth. आईडी हो गई गेम. forth हाँ many आईडी हो गई गेम कहाँ से आ disasters. गई भाई चैट में. The star began to आईडी हो waver. गई गेम. हाँ मैंने खेला भाई वो Instead गेम. of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the अरे वो मैं night फर्स्ट टाइम sky? स्ट्रीम कर रहा था पता है. मैं वो But दिक्कत in ये the होती है मैंने end, माइक बंद किया ना she तो couldn't स्ट्रीम की give up साउंड the गायब हो गई. radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. कोई But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. 100 मिलियन पे फेस सेविंग ना. Tomorrow afternoon just 100 happens पे to नहीं be a मैं shopping day for her. 5-10K पे भी कर दूंगा बट तुम 5-10K करवा दोगे तो To prepare, जितनी जल्दी let's go करवा check out दोगे some तुम of her 5K favorite उतनी जल्दी spots मैं and have a quick chat with a few of the vendors फेस there. सेविंग कर दूंगा. 10K पे मैं फेस कैम के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा. अब तुम्हारी मर्जी तुम कितनी जल्दी करवा सकते हो. अब ये तुम सोचो. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... भैया मैं भी जापान चलूँगा. तुम नहीं जाओगे भाई. भागा क्यों तुम? that Haruka and Maruka are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord Yeah, of but Theo's it's- financial it's- savviness, and brawling with the god of Electro. आशिका. Do those count? अच्छा. Oh, nothing. Go on, I am pick an 13. aspect for her to divine. भाई तुम 13 हो गए तो क्या हुआ. अभी भी बहुत टाइम है. डिवाइन. My perspective in love. Love prospects? No problem at all. The gods have spoken.
the truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could What the heck, bhai? Hurried, Murray, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. भाई ये तो सच है भाई टैब में भाई सच है ये Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Hart and Murt on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. भाई इसने सच तो कहा यार मुझे लगा झूठ झूठ के आएगी भाई सच तो कहा उसने टैब में के पास बहुत सारे ऑप्शन तो हैं भाई अब मुझे नहीं पता आरडी में से एक है कि नहीं Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. Wait, When you what? start talking with them, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear Suggesting matrix, हाँ मैंने notice किया था Would you ये like to look at some pottery? We caught wind मैं of your भूल ना जाऊँ इसमें great screenshot नहीं है craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy. All our goods are sure to meet your every need. This should be our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing! प्रभव भाई but मेरे पास एक you क्वेश्चन find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right.
It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an Suggest official any student, game for I'll be gameplay happy. videos. ऐसी कोई गेम जिसकी गेमप्ले वीडियो बनाना अच्छा होगा. माइनक्राफ्ट को मत करना. माइनक्राफ्ट में ना मैं वो 100 डेज हार्ड को ये सब करते करते ना मैं पक गया हूँ. मैं कर रहा था माइनक्राफ्ट का 100 डेज हार्ड को, मैं मर गया. So, was that everybody? किसी हॉरर गेम का करेगा? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems. Genshin Impact glitches. भाई Genshin Impact glitches के लिए मुझे glitches यूज़ करने पड़ेंगे. Aramites in Port Ormuz Horror. are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a कौन सा boatload horror of game का बना nonsense, ये भी तो the है. faith of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Thinking for new games. So, how I do वो we paid set है that भाई. up? Case Well, animate King Deshret is long gone, animatronics. and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. Genshin Impact कैरेक्टर स्मैश हो बस भाई. मेरे 35 डेज हुए. बाकियों को ये बात बताऊँ तो समझ भी आता है. तुमको कैसे बताऊँगा भाई, ये बात है. Also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. कैरेक्टर शो भी करने पड़ते हैं उसके अंदर कि ये कैरेक्टर है भाई, इसके पास ये एबिलिटी है. मैं दूसरों की वीडियोस का यूज़ नहीं कर सकता ना हर टाइम. I've been observing humans for a while. I've never been good at imitating them. राइडन स्मैश हो पास. राइडन स्मैश भाई, कंफर्म स्मैश है. यूज फोटोज. राइडन को तो कंफर्म स्मैश करना है भाई. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But उनकी seeing how नॉलेज भी तो होनी things are चाहिए. मुझे now, लगता है किसी और की वीडियो देखनी I probably पड़ेगी. should just accept ये what 1000 was ईयर. shown. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. रिस्पेक्ट एंड अरे भाई, आई एम रिस्पेक्टिंग भाई. मैं भाई देखो इतने सांग से इतने सांग से राइडन को कितने 1000 सांग हो गए ना. उसका सैडनेस को किस तरीके से काउंटर करने के लिए एक तरीके से कैसे काउंटर वे है उसका ये. ओ वे ये क्या हुआ.
अच्छा टुमारो, यार मैंने आज ही कहा क्या है टुमारो, मतलब एक और बाई करना पड़ेगा मुझे। FBI ओपन अप। टुमारो, ये तो टुडे का था ना ये तो। भाई FBI गार्डन को देखेगा ना भाई, वो खुद कहेगा भाई कोई बात नहीं। वी आर विद यू, जिनका जो इंचार्ज हो ना कहेगा भाई आई एम विद यू भाई। सिम सिम भाई, यही तो बेस्ट ऑप्शन है। सितारा, मतलब ये इसका नाम इसका नाम सितारा है। Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. I'm starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? अरे नाम क्या था इसका? ओ इनका नाम क्या था पापा भाई? हागुट मागुट? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Please pay no mind to those kinds of details. The gods are asking, Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And, if I may ask, Nabia, what the fuck is wrong with you? Specific god who's the game is better than right your now? own career. Don't say that. Shut up, that Bingu Wing. I know we are just. I will miss Bingu Wing. He's just joking. And naive question. Not making fun. The god who is speaking to me is, We of own course, Sim for the Raiden Shogun. wisest and So don't mightiest think of we are all, making fun of her. King Deshret.
King Deshret? No wonder he would make such demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can King Deshret still exist in real life? I want to ride. I want to ride and Shogun. मैं कहना चाहता I want to ride. What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. Very sus. भाई sus तो हूँ something मैं. she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her? That must have shaken her to the core. Aw, Nahida. It seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harabatha theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. He's out of Keys now. Right on cue. Let's get ready to possess him right away. Good. I will take Raiden. एक बात बताऊं भाई देखो Raiden Shogun is mine. Don't think that you can have her. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, I want both. He's been retired there for a while. Okay, if I you can could have find the puppet. time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean... You've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa!
Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Even power than Raiden Shogun. Raiden and Himiko from Honkai Impact is mine. Sataria's already started talking with Shishan. Listen, Prabhav bhai. Raiden plus 20 more characters in Genshin Impact is mine. Himiko plus 10 more characters in Honkai Star Rail is mine. तो 30 प्लस 2 32 कैरेक्टर्स जो है ना ये मेरे हैं भाई, इनसे दूर रहो। तो भाई एक सेकंड, क्या टाइम हो गया? टाइम भी हो गया, एक सेकंड। 10 बजे से हम स्टार्ट करते हैं वो होंकाई। So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, भाई तुम्हारी एक चीची है भाई, someone was you can have trying to चीची। preach to you about something? Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeria's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? Yes, You, Chichi. who worked side by side with the Academia and treated people as nothing more than Not Chichi. experimental subjects. Please stop! क्विकी QI जो है इसमें क्विकी Even now, Sataria's still Genshin trying to Impact. run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? अरे यार कुकी नहीं भाई, एक सेकंड बताएंगे भाई, क्या नाम है इसका यार? क्विकी क्या नाम है इसका? शिट Seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. No matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides,
Did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance? Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So... if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon? That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Wait. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. भाई 50-50 हारने पे कौन सा मॉन्स्टर मिलता है? ज़ॉम्बी छोटी सी ज़ॉम्बी आइस कायो 5-star ज़ॉम्बी. Oh man. But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Wait. बहुत सारे एक्सक्यूजेस के बाद फाइनली टाइम है रिवीलिंग करने का. तुम्हारी डेस्टिनी which you deserve is here. प्रभव नाम सुना है उनको? प्रभव भाई तुम यहाँ अपने पिक्चर छोड़ेगे हो क्या कुछ फोटो बुक? No, it's not a John Cena bro. अब मैं क्या सोचा हूँ, होंकाई इम्पैक्ट खेलेंगे क्या थोड़ी देर तक? होंकाई आई मीन
मैं जॉन सीना वुमन अगेंस्ट दोनों फेवरेट है भाई। आर एंड जेसी, यू कांट सी मी एंड सुपरमैन पंच। मैं इसके पास कैसे जाऊंगा भाई? वो This suspect has admit. भाई नशा नहीं। I trust you. होंकाई स्टार्ट किया क्या थोड़ी देर तक? इफ यू आर इंटरेस्टेड। हाँ वही। क्या हुआ? मन नहीं है खेलने का भाई? होंकाई में वो ना मूव एक्सचेंज है ना, ये तो यार ये वेस्ट है भाई। जो मूव बेस वाले होते हैं ना बहुत गंदे होते हैं। हाँ, वेट हंटिंग नाइट। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone. मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ तो थोड़ा बहुत खेलूँगा। नज़ारे नहीं है उसमें जेंशिन इम्पैक्ट। हाँ वो थोड़ा सा ऐसे है ना, जैसे फ्यूचरिस्टिक दिखाने के चक्कर में उसको ना थोड़ा सा जैसे वैसे है, फेड जैसे है थोड़ा। जेंशिन भाई जेंशिन है 19 टू वो 19 तो गेम है। टाइम क्या किया मैंने? कंफर्म। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. ये क्या करना है इसमें? It has been a long time since and many things cannot be said until neither get back in form. Today you go to adventure game as usual. Spicy energy drink. I'm sure it'll. नाइक को भाई 3 बंदे। वो आज मिकासा नहीं आई भाई। ये प्रभाव भाई अभी मैंने नोटिस किया भाई मिकासा नहीं आई भाई आज। That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yeah, Paimon's right. मैं वो रिमेम्बर करूँ कि कौन-कौन से ऐसे हैं रेगुलर व्यूअर्स जो आज नहीं आए, जैसे कि मिकासा हो गया, मिकासा हो गई, सीओ प्रतीक, ये जोकर भाई 3 शिवपति को जोकर भाई दोनों की तो स्टडी से स्टार्ट हो चुकी है तो दोनों नहीं आ पाएंगे। डार्कनेस तो आए थे स्टार्टिंग में 4-5 पता है इसको 4-5-6 ऐसे सब्सक्राइबर्स है जो मेरे माइंड में है, मैं नाम तो याद नहीं है बट वो हैं जो स्कूल की वजह से नहीं आ पाए। Anyway, enough about
just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria मेरे figured दूसरे out a चैनल का way नाम to not बताइए only जगह से। distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, बताओ ये just so we can exchange the नहीं भाई। documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. एनिमे बॉय But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. एनिमे बॉय है भाई तुम्हारे दूसरे चैनल का As नाम long as you're here with us, Paimon feels a little safer. La da 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 da. जाना ही पड़ेगा क्या मुझे वॉक करते हुए वहाँ पे? फ़ोन आ गया था मुझे तो मैं फ़ोन पे थोड़ा फोकस कर रहा था उस टाइम। इधर नहीं जाना तो किधर जाना है हमें? वो अच्छा ऊपर की साइड। There really aren't many people out right now. टेलीपोर्ट कर कहाँ टेलीपोर्ट करूँ भाई? Unable to use teleport first कहाँ है? टीपी नहीं कर सकता भाई मैंने ट्राई किया था टीपी करने का। अरे रास्ता किधर है? इधर जाना है ना भाई। तो मुझे ना रास्ते इसके याद नहीं होते बिल्कुल भी। पता है भाई अंदर जाना है मुझे। वाह भाई कहाँ जाना है ये? सबको एक साथ टपका देंगे, टेंशन की बात नहीं है। ऊपर जाना है। इतने रोटेशनल वो होते ना इसमें भी। भाई डेंडो बन गया भाई। What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. फटुई हार बन The outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Samir City. What have you done to them?
I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. अरे मेरे हिसाब से थोड़ा चलता है गन 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 कैसे भागूं मैं? Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. This should be far enough. Whew. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. Save Nahida quest start भाई अब देखते क्या कर सकते हैं हम. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep, sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah, now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है भाई, मल्टीवर्स हो सकता है कोई. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia forest? That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Time to go. गुड नाइट जाग हो क्या तुम? 10 मिनट के बाद स्ट्रीम एंड हो गई, 10 मिनट बाद जाना भाई.
Time to go. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the Academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! You're up, traveler! Following orders. New punching bag. Nice and spicy! One with nature. Yeah! Into the wind. Judgment! Boba, get them! The wind knows me. One with nature. You can't run! The wind knows me. It isn't over yet! Here comes reinforcements! Fine. Wind straddle. Judgment! Boba, get them! One with nature. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Chimera? Ninguém vai. Que isso, vai. Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. Que isso. ये कहाँ पे? अबे यार टच कहाँ होगा? मैं टच कहाँ गया? ये कहाँ है? ये आएगा इसके ऊपर होगा, ये जो अपना ये ट्री के ऊपर। एक सेकंड, इसे एक ही जंग से जब आए हैं तो कैसे जाएं पर इस पे?
rainforest. Into the wind. Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. Time to go! Clear weather all around brightens the heart. Who says there aren't benefits to a life of wonder? Follow the wind. ये वो अच्छा वहाँ है। मैं नोटिस नहीं किया था उसको अभी तक। स्पीड पे है इस पे। हो गया ये तो। अब जाना है यहाँ पे। Okay. Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Holly, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari has taken me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Khelte. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Party's DI. He left? But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time, though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Immorta Darshan of the Academia, and Partis DI is something like the Immorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis DI. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Don't worry. I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Khelte. Clear weather all around brightens the... Wait! Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey!
This was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment! Actually, it's very smart of the Traveler to be wary of me right now. After all, the Doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the Doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people alright? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the Doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The Doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the Doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already... Ugh. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the Doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the Traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Follow the wind. Time to go. Surely he's not a bad guy. Traveler? It is you! Ah, it's Hypatia! Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... Oh, you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! It's
so exhilarating to share this sublime joy with others at long last! When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was! That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world